त चऊं था इहा आहे अॼोको प्रोग्राम में असीं फोकस बि कंदासीं त ॿिनि मिशन्स ते कंदासीं। हिकिड़ो मिशन आहे जेको वज़ीर आज़म खणी मास्को अॼु पहुचण वारा आहिनि, अॼु राति ताईं हू मास्को पहुची वेंदा। ऐं ॿियो मिशन आहे जंहिंखे वठी करे ऑपोज़िशन जी मुलाक़ातुनि में तमामु घणी तेज़ी असांखे नज़र अचे पई। उहो मिशन आहे अदम एतमाद वारी रिथ जो। अॼु हुकूमत ख़िलाफ़ ऑपोज़िशन जे हुकूमत जे सियासी मुखालिफ़नि जो हिकु वॾो कठ थियो आहे ऐं उन कठ जे हवाले सां, उन वॾी वेहक जे हवाले सां इहे इतला साम्हूं अचनि पिया त अॼु जेके बि मामला हलंदड़ आहिनि उन्हनि खे आख़िरी ऐं हतमी शक्ल ॾिनी वई आहे। जेकॾहिं मुलाक़ातुनि जी ॻाल्हि कयूं था त असांखे ॾिसण में अचे पियो त 5 फरवरीअ खां हलंदड़ महीने जी 5 तारीख़ खां मुलाक़ातुनि जो आगाज़ थियो। 5 फरवरी ते नाज़रीन आसिफ़ ज़रदारी साहब, बिलावल साहब ऐं शहबाज़ शरीफ़ विच में मुलाक़ात थी। उनखां पोइ आसिफ़ ज़रदारी साहब ऐं चौधरी भाइरनि विच में मुलाक़ात थी आहे। इन खां पोइ वरी मुलाक़ात थी आहे मियां शहबाज़ शरीफ़ ऐं चौधरी भाइरनि विच में। उनखां पोइ हिकु ॿी मुलाक़ात थी आसिफ़ ज़रदारी ऐं मौलाना फज़लुर रहमान विच में। उनखां पोइ हिकु ॿी मुलाक़ात थी आहे आसिफ़ ज़रदारी, बिलावल ऐं शहबाज़ शरीफ़ साहब विच में। जंहिंखां पोइ कुझु ख़ुफ़िया मुलाक़ातुनि जो ज़िक्र बि थियो त जहांगीर तरीन साहब सां मुलाक़ात थी आहे शहबाज़ शरीफ़ जी। ऐं उनखां पोइ नाज़रीन अॼोको ॾींहुं असां ॾिसूं था, असां ॾिठोसीं त तमामु घणो हैपनिंग अॼोको ॾींहुं बि आहे। काल्ह हिकिड़ी अहम मुलाक़ात कई आहे ज़रदारी साहब मौलाना फज़लुर रहमान सां। ऐं अॼु जेका मुलाक़ात थी आहे उनमें शहबाज़ शरीफ़ साहब जी दावत ते आसिफ़ ज़रदारी साहब, बिलावल साहब ऐं मौलाना फज़लुर रहमान साहब ही पहुता उते ऐं तफ़सीली मुलाक़ात थी आहे, तफ़सीली ॻाल्हि ॿोल थी आहे हिन समूरनि मामलनि ते। अॼु इतला इहे साम्हूं अचनि पिया त अॼु राति हिकु ॿी अहम मुलाक़ात थियण वञे पई ऐं हे कुझु ई ॾींहंनि अंदरि, यानी 2 हफ़्तनि अंदरि ॿी मुलाक़ात हूंदी चौधरी भाइरनि सां आसिफ़ ज़रदारी साहब जी। अॼु आसिफ़ ज़रदारी साहब चौधरी भाइरनि खे घुराए वरितो आहे त बैक टू बैक जेके मुलाक़ातूं थियनि पयूं उन्हनि हुकूमत जे कॉन्फिडेंस, ऑपोज़िशन जे कॉन्फिडेंस में त इज़ाफ़ो कयो ई कयो आहे, पर उन सां गॾोगॾु हुकूमत लाइ परेशानियूं वधाए छॾियूं आहिनि। पर उन्हनि परेशानियुनि बावजूदि हुकूमत तमामु घणे कॉन्फिडेंस जो मुज़ाहिरो अञा बि करे पई। हुकूमत इहा ॻाल्हि करे पई त हिन वक़्तु सूरत हाल इहा आहे त ऑपोज़िशन वटि कुझु बि कोन्हे, ऑपोज़िशन सियासी मार खाईंदी। गॾोगॾु इहा इल्ज़ाम बि हणनि पिया, दावा करे पई हुकूमत त असांजे MNAs जंहिंजे हवाले सां ऑपोज़िशन दावा कंदी आई त उहे असां सां गॾु आहिनि, उहे असां सां उन ऑपोज़िशन सां गॾु न, पर उन्हनि खे ऑपोज़िशन पैसनि जी आछ करे पई जेका असांजे MNAs पारां उहा आछ रद्द कई वई आहे। ही समूरी सूरत हाल आहे नाज़रीन। ही जेको मिशन असांखे नज़र अचे पियो उन खे वधीक जो प्रोग्राम में फोकस कंदासीं। इन मामले ते बि नाज़रीन इतला साम्हूं अचनि पिया, ज़रियनि जो इहो चवणु आहे त ऑपोज़िशन जा जेके बि मामला थिया आहिनि, ॿियनि खोड़ मामलनि ते इतफ़ाक़ थियो आहे, पर अञा ताईं कुझु मामलनि ते डेडलॉक ॿुधण में अचे पियो। जंहिंमां हिकिड़ो मामिलो इहो बि आहे त पहिरियां जेका अदम एतमाद जी वारी रिथ आहे उनजी पहिरीं मंज़िल कहिड़ी हुजणु घुरिजे, पंजाब खां आगाज़ कजे या मर्कज़ खां कजे, ऐं उन सां गॾोगॾु ही टेबल करे कजे। छाकाणि त आइन जो आर्टिकल 95 इहो वाज़े तौर ते ॿुधाए थो त जॾहिं अदम एतमाद वारी रिथ टेबल कई वेंदी त उनजे 7 ॾींहंनि अंदरि उन ते वोटिंग कराइणी आहे। ऐं वोटिंग जी सूरत में मैजिकल नंबर खपे, जेको हिन वक़्तु ऑपोज़िशन वटि मौजूदु न आहे, पर ऑपोज़िशन जी दावा आहे बहरहाल त असां उहो मैजिकल नंबर हासिलु करे वठंदासीं। नाज़रीन ही त मिशन हो जेको असीं अव्हांखे ॿुधायोसीं त ऑपोज़िशन जंहिंखे वठी करे तमामु घणी सीरियस ऐं सरगर्म नज़र अचे पई। हिकु ॿियो मिशन आहे जंहिंखो खणी करे वज़ीर आज़म साहब रशिया पहुतल आहिनि। हू बि तमामु घणी अहम डेवलपमेंट आहे, छाकाणि त 2 ॾहाकनि खां पोइ कंहिं बि पाकिस्तानी वज़ीर आज़म जो रूस जो पहिरियों दौरो आहे ऐं रूसी सदर जी दावत ते वज़ीर आज़म साहब उते वियल आहिनि पंहिंजे कैबिनेट जे मेंबर सां गॾु। पर ही दौरो उन वक़्तु थिए पियो जॾहिं यूक्रेन जो जेको तकरार आहे इन वक़्तु पंहिंजे उरूज ते पहुतल आहे। त हिन वक़्तु तमामु घणी अहम सूरत हाल आहे। इन दौरे खे बि तमामु घणी अहमियत वारी नज़रुनि सां ॾिठो पियो वञे, पर हिन दौरे खे वठी करे जेके ख़दशा आहिनि उहे बि बहरहाल मौजूदु आहिनि। त अॼोके प्रोग्राम उनखे बि डिस्कस कंदासीं। मूंसां गॾु जेको पैनल मौजूदु आहिनि जो तारुफ़ सां कराईंदसि, मूंखे जॉइन कयो आहे नाज़रीन सीनियर मूंसां गॾु अॻूणा सफ़ीर आहिनि, सीनियर तजिया निगार आहिनि जमील अहमद साहब, वीडियो लिंक ते मूंसां गॾु मौजूदु आहिनि। मूंसां गॾु मौजूदु आहिनि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ सां तालुक़ रखंदड़ MNA आहिनि अकरम चीमा साहब। फ़ोन लाइन ज़रिए मूंसां गॾु अॼोके प्रोग्राम में शरीक हूंदा। मूंसां गॾु सीनियर सहाफ़ी तजिया निगार आहिनि अदनान आदिल साहब, मूंसां गॾु लाहौर खां वीडियो लिंक ज़रिए अॼोके प्रोग्राम में शरीक आहिनि। ऐं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मां नवाब यूसुफ टालपुर साहब खे प्रोग्राम में शिरकत करणी, पर कमिटमेंट बावजूदि हू प्रोग्राम में पंहिंजी कंहिं मसरूफ़ियत सबबु शिरकत उन्हनि न कई आहे। जेको पैनल मौजूदु आहे उन्हनि सां गुफ्तगू जो आगाज़ कंदासीं। अवां सभिनी खे वेलकम कयां थी अॼोके प्रोग्राम में। ऐं अवां जी इजाज़त सां अकरम साहब आपसे आगाज़ करती हूँ आज के प्रोग्राम का। मैंने जिक्र किया कि 2 मिशन इस वक्त हमें सारा फोकस ऑपोजिशन का अदम एतमाद वाले मिशन पर फोकस है, और हुकूमत का जो मिशन है वो वज़ीर आज़म साहब का इस वक्त एक बहुत ही अहम दौरा इस वक्त शुरू हुआ है।
اس پر نظر آ رہا ہے. لیکن اس جو اپوزیشن کا مشن ہے اس کو لے کر اپوزیشن تو کانفیڈنٹ نظر آتی ہے کہ ہم اپنے نمبرز پورے کریں گے اور جو میجیکل نمبرز ہیں وہ ہمارے حق میں ہوں گے, ہمارے فیور میں ہوں گے. لیکن حکومت اس ساری صورتحال میں, سارے سین میں اوور کانفیڈنٹ نظر آ رہی ہے. اس کا کیا سبب ہے اکرم صاحب؟ آپ پاس ایکسپیرینسز کو سامنے رکھ رہے ہیں جو اپوزیشن نے پہلے بات کی, یا کہیں پر رائٹنگ آن دا وال ہے, کوئی اشارہ حکومت کو ملا ہے کہ ہونا کچھ نہیں ہے ان سرگرمیوں سے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں ناجیہ, اصولی طور پہ تو یہ جو ہوا کریٹ ہو رہا ہے تھرو میڈیا اور یہ ملاقاتوں کے ذریعے عدم اعتماد کا, یہ میں سمجھتا ہوں کہ چائے کی پیالی میں طوفان سے زیادہ اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے اس وقت پاکستان تحریک انصاف کے سامنے. ٹھیک. اور یہ اس سے پہلے بھی کرتے رہے. بیسیکلی جو اس وقت صورتحال ہے ان کے کیسز کے حوالے سے, ان کو آپ اپنی گردنوں کے گرد پھندا جو ہے وہ تنگ ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے. تو اس لیے یہ اب یہ نکلے ہیں اپنا تحریک عدم اعتماد کو لے کر. لیکن اس میں بھی دیکھیں گے آپ انشاءاللہ تعالیٰ کہ عمران خان نہ صرف سرخرو ہوں گے بلکہ ان کی عدیدی اکثریت بھی میں سمجھتا ہوں کہ جو لوگ ان کو چھوڑ کے جا چکے ہیں, اس کے بعد جو ان کی عدیدی اکثریت ہوگی اسمبلی کے اندر, وہ بھی پاکستانی قوم کے سامنے آ جائے. ٹھیک. لیکن اکرم صاحب, آپ نے کہا کہ ہوا بنایا ہوا ہے اس وقت میڈیا نے, اپوزیشن نے, لیکن ہمیں تو آپ کے جو ساتھی ہیں ان کی طرف سے سننے کو ملا کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ حکومتی MNAs کو کوشش کی جا رہی ہے, پیسوں کی آفر بھی دی جا رہی ہے, ہارس ٹریڈنگ کی وہ بات کر رہے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ آپ کے اتحادی ہیں جو دھڑا دھڑ ملاقاتیں کر رہے ہیں. دیکھیں یہ پالیٹکس ہے. پالیٹکس میں کسی سے ملاقات کر لینے کا مقصد یہ نہیں ہوتا کہ وہ آپ جس کام کے لیے آپ ان کے پاس گئے. دیکھیں سیاسی لوگ ہمیشہ, سیاسی جماعتیں جو ہیں وہ ایک دوسرے کے لیے دروازے کھلے رکھتی ہیں اور سیاسی جماعتوں کے قائدین ایک دوسرے سے ملتے رہتے ہیں. تو اس سے زیادہ میری نظر میں اس کی کوئی اہمیت نہیں. ٹھیک. عدنان صاحب, آپ کیا کہیں گے؟ وہ سمجھتے ہیں کہ اس سے زیادہ کوئی اہمیت نہیں ہے, اور اگین میں نے بتایا کہ وہ سیاسی مار وہ سمجھتے ہیں کہ اپوزیشن کو اس بار بھی کھانی پڑے گی. کیا کہیں گے آپ؟ بات یہ ہے کہ اپوزیشن نے ایک بات تو ہے کہ پریشر بہت بلڈ کر لیا ہے اور میڈیا میں اس کا بہت چرچا بھی ہو گئی ہے, مومنٹم بن گیا ہے. ایک چیز تو انہوں نے حاصل کی ہے کہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے اختلافات جو ہیں اب وہ نظر نہیں آ رہے. وہ لگ رہا ہے کہ دونوں بالکل ایک پیج پہ ہیں اور ان میں ہم آہنگی ہے. اسی طرح کسی جمعیت علماء اسلام کے ساتھ بھی جو تحفظات تھے اور اختلافات تھے پیپلز پارٹی کے, وہ دور ہو گئے ہیں. تو یہ تین بڑی جماعتیں اپوزیشن کی جو ہیں وہ بالکل یکجا ہو گئی اور لگ رہا ہے کہ بہت پرعزم ہیں کہ وہ ڈٹرمنڈ ہیں کہ کسی طرح عمران خان صاحب کو وہ اقتدار سے نکال دیں, حکومت سے نکال دیں. یہاں تک تو بات ٹھیک ہے. اب ان کا انحصار کس پر ہے؟ ان کے پاس تو 150 سے زیادہ ووٹ نہیں ہے. ان کا انحصار ہے کہ پی ٹی آئی کے منحرف ارکان 10 سے 15 ارکان جو ہیں وہ پی ٹی آئی کا ساتھ چھوڑ دیں اور ان کے ساتھ مل جائیں, جس میں اہم رول جو ہے وہ جہانگیر ترین گروپ کا ہو سکتا ہے. اور ان کے جو ہیں 15-20 لوگ جو ہیں وہ پنجاب اسمبلی میں بھی ہیں, تو پنجاب کی حکومت بھی وزار صاحب کی گرائی جا سکتی ہے. لیکن میری اطلاع کے مطابق ابھی ترین صاحب جو ہیں انہوں نے حتمی حامی نہیں بھری ہے. اسی طرح قاف لیگ نے بھی حتمی حامی نہیں بھری ہے. آج ملاقات فضل الرحمان صاحب نے ان سے کی ہے, لیکن ان کے تحفظات ہیں اور وہ اس کی کافی ڈیٹیل ہیں. اگر آپ کے پاس وقت ہوگا تو میں بتا دوں گا. اسی طرح ایم کیو ایم بھی ابھی آن بورڈ نہیں ہے. تو اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ کیا اس میں کوشش میں, اگر فرض کریں پی ٹی آئی کے جو ارکان ہیں وہ حکومت سے ہٹ کر, اپنی جماعت سے ہٹ کر اپوزیشن کا ساتھ دیتے ہیں تحریک عدم اعتماد میں, تو وہ ڈیفیکشن کلاز کے تحت رکنیت سے محروم ہو جائیں گے. پھر وہ حکومت بنانے میں ووٹ نہیں دے سکیں گے. تو یہ حکومت گرا تو سکتے ہیں, حکومت بنا نہیں سکتے ہیں. تو اس لیے اب ان کے درمیان یہ مشاورت ہوئی ہے کہ پہلے اسپیکر قومی اسمبلی کے خلاف تحریک عدم اعتماد لائی جائے, کیونکہ اس میں خفیہ رائے شماری ہوتی ہے اور پتہ نہیں چلے گا کہ کون کون سے لوگ منحرف ہوئے. جیسے یوسف رضا گیلانی کو ووٹ پڑ گئے تھے پیپلز پارٹی کے اور وہ سینیٹر منتخب ہو گئے تھے اسلام آباد سے پی ٹی آئی کے منحرف ارکان کی وجہ سے. تو ابھی یہ جو معاملہ ہے وہ فائنل سٹیج پہ نہیں پہنچا ہے, لیکن اپوزیشن ہر حال میں یہ تلی ہوئی ہے
इस हुकूमत को गिराना है। ठीक, अदनान साहब आपने कहा कि अभी आप समझते हैं कि मामला फाइनल स्टेज पर नहीं पहुंचा, लेकिन जो सरगर्मियां और कुछ बयानात हमारे सामने आए, आपने भी ज़रूर सुने होंगे। बिलावल साहब कहते हैं कि हमारी लॉन्ग मार्च से पहले कोई बड़ा सियासी धमाका हो सकता है। हमने देखा कि हुकूमती MNAs हों, मुस्लिम लीग नून की जानिब से भी, ख़ुद हुकूमत की जानिब से भी अपने MNAs को बाहर जाने से रोकने के बयानात सामने आए, तो अचानक से बड़ी सरगर्मियाँ तेज़ हो गई हैं। आप समझते हैं कोई इस लॉन्ग मार्च जिसमें अब कुछ ही दिन रह गए हैं पीपल्स पार्टी के, कोई बड़ा सियासी धमाका हो सकता है, या अब चीज़ें बिल्कुल फाइनल तक पहुंचने वाली हैं? इनकी पहले तो कोशिश ये थी कि ऐसी फजा बनाई जाए कि इमरान खान पैनिक होकर और घबरा कर असम्बलियां तोड़, लेकिन इमरान खान जो हैं वो नफसियाती तौर पे मजबूत आदमी हैं, फाइटर आदमी हैं, उन्होंने असम्बलियां नहीं तोड़ी अब तक, और अब भी ये इम्कान नजर नहीं आता कि वो घबरा कर असम्बलियां तोड़ देंगे। वो रूस के दौरे पे चले गए हैं, बहुत ही अहम है, जैसा कि आपने अपने शुरू के बयान में कहा, और अगर वहां पे उन्हें कुछ कामयाबियां भी मिली, कोई ऐसे समझौते हो गए, तो उनसे उनके इमेज में भी इजाफा होगा। अब दूसरी बात यह है कि अब ये कोई फरवरी के आखिरी हफ्ते में किसी किस्म की तहरीक पेश करेंगे। नून लीग ने कहा है कि अगले 72 घंटों में उसके तमाम अरकान कौमी असम्बली जो हैं वो लाहौर या इस्लामाबाद में रहें, इससे बाहर न जाएं, और जो बाहर हैं मुल्क से बाहर या और शहरों में वो भी यहाँ पहुंच जाएं। तो ये बात तो नजर आ रही है कि ये कोई ना कोई तहरीक पेश अब करेंगे, वरना इनकी अवाम में क्रेडिबिलिटी नहीं अपने MNA से लेना शुरू कर दिए हैं अदनान साहब। जी, और अब देखना ये है कि क्या तहरीक इंसाफ जो है वो भी तो दावा कर रहे हैं कि इनके लोग उन्हें तोड़े हुए हैं। अगर हो सकता है कि इनके लोग अगर उन्होंने वाकई तोड़े हुए हों और वो इनके उसमें ना आए, तहरीक अदम एतमाद में जो स्पीकर के खिलाफ ये पहले पेश करना चाहते हैं, तो उससे अपोजिशन को सेटबैक होगा। लेकिन एक बात है कि अब अपोजिशन कुछ ना कुछ करेगी जरूर, लेकिन तरीन ग्रुप के ऊपर सारा इन्हसार है, और अभी कोई मीटिंग होने वाली है आज या कल। तरीन साहब 3 दिन अस्पताल में रहे हैं, वो खासे बीमार हो गए थे, तो अब वो घर वापस आए हैं। आज या कल उनसे तहरीक इंसाफ की टॉप लीडरशिप का एक वफ्द मिलेगा। मेरा ख्याल है परवेज खटक साहब मिलेंगे, क्योंकि वो उनके बहुत करीब हैं। तो देखना होगा कि तरीन साहब क्या फैसला करते हैं, क्योंकि अगर हुकूमत गिर जाए तो नून लीग को तो फायदा हो सकता है, तरीन को क्या मिलेगा? न वजारत आला मिलेगी, न वजारत उज़्मा मिलेगी। ठीक, तो आप समझते हैं कि अभी ये वाले मामला तय होना बाकी हैं कि किसको क्या मिलना है या किसको क्या हासिल हो सकता है। सफारती मामला के एक्सपर्ट हैं जमील साहब अवां वटि ईंदसि। ही जेका सियासी सूरत हाल है मुल्क जे डोमेस्टिक फ्रंट ते असांखे जेका सिचुएशन नज़र अचे पई, ज़रूर अवां जे आॾो बि हूंदी, परसेप्शन्स तमामु घणो मैटर कनि था। पोइ अंदर जी सूरत हाल हुजे, असीं फॉरेन अफेयर्स जी ॻाल्हि कयूं, ऐं हिन वक़्तु जेके परसेप्शन, जीअं अदनान साहब चयो त हिकिड़ो परसेप्शन त ऑपोजिशन जोड़ण में कामयाब वई आहे त ही सरगर्मियूं तमामु घणियूं तेज़ थियण जो मतिलबु इहो आहे त ऑपोजिशन वटि कुझु हथ में अची बि चुको आहे, ऐं बिल्कुलु फाइनल स्टेज ते आहिनि, सफ़ा तयारु आहिनि। ऐं गॾोगॾु हिकु ॿियो परसेप्शन्स त हीअ हुकूमत एतिरी कमज़ोर आहे जेका जिन सहारनि ते बीठल आहे उहे बि कंहिं वक़्तु बि हुकूमत जो साथ छॾे सघनि था। उन ते बि ज़रूरु कॉमेंट कजो, उनखे ई साम्हूं रखंदे हिन वक़्त में जंहिं वक़्तु अंदरि बि जेका सूरत हाल आहे तमामु घणी नाज़ुक आहे, जेका ख़िते जी सूरत हाल आहे उहा बि तमामु घणे नाज़ुक दौर मां गुज़रे पई, उन वक़्त में वज़ीर आज़म जो हीउ दौरो असांखे छा ॾेई सघे थो? वज़ीर आज़म जो दौरो इन वक़्तु अॼु खां वठी सैंक्शन लॻी वई आहे हुन ते, रशिया ते अञा जेके 2014 में लॻी उन खां मथे करे छॾियो आहे उन्हनि, ऐं ॿियूं सैंक्शनूं सुभाणे परीं ताईं सख़्तु सैंक्शनूं लॻी वेंदियूं। त जे वज़ीर आज़म जो दौरो ख़ासि तौर ते जेको 1100 किलोमीटर जेका स्टीम पाइपलाइन विछाइणी हुई कराची खां कसूर ताईं, उहो पहिरियां बि सैंक्शन जो शिकार थी वियो 2014 में, हाणे बि लॻे थो त सैंक्शन जो शिकार थी पवंदो। त हिकिड़ी त जेका सभिनीनि में वॾो जेको एजेंडा पॉइंट, ॿी ॻाल्हि इहा हुई त असां रशिया खां 2012 खां वठी रशिया सां असांजो चङो लॻापो शुरू थिए थो पियो, चङा रिलेशन असां शुरू थियनि था पिया। रशिया असांखे 2021 में असांजी तिजारत, असांजो वापारु रशिया सां तक़रीबन 800 मिलियन ताईं पहुची वियो। पोयनि वक़्तनि में तमामु हिन खां अधु बि न हो, 45.8% जेको आहे असां वधारो कयोसीं पंहिंजे इन में ट्रेड में। त ट्रेड जे लिहाज़ सां असां सम्झा थो ज़रूरु कुझु न कुझु समझौता थींदा, पर अरिड़हं वक़्तु इहो आहे त जेके समझौता असां थींदा या जेके MOU एग्रीमेंट साइन बि थींदा त उन में उहा ई सैंक्शन साम्हूं अची वेंदी
ऐं उनजो एतिरो को फ़ाइदो नज़र न ईंदो जो अॼु खां वठी बाइडन उन सैंक्शन अनाउंस करे छॾी आहे, यूरोपियन यूनियन करण वारी आहे, हाणे यूके करे छॾी आहे, जर्मनी करे छॾी आहे, त उन में उहो मसइलो थींदो। हा, हिकिड़ी ॻाल्हि ज़रूरु आहे त जेकी बॉटरिंग जे तहत असां पंहिंजो इहो कंप्लीट कराए था सघूं, जेका 1100 किलोमीटर जी असांजी पाइपलाइन आहे, या असां स्टील मिल बि उन ते बि असांजी ॻाल्हि हले पई पोयनि सालनि में, इन दफ़े शायदि उन ते बि को ॻाल्हि थिए। पर प्रॉब्लम हिकिड़ी हिते वॾी इहा आहे त जीअं ईरान जी मां मिसाल ॾियां त ईरान तव्हां जॾहिं संक्शन हटायो हुननि 2014 में 15 में, उन वक़्तु जेॾी महिल उन्हनि जी JCPOA यानी न्यूक्लियर रिकॉर्ड थियो त उन वक़्तु 400 कंपनियूं यूरोप मां आयूं। जीअं वरी जो पुराणो सदर जेको आहे ट्रम्प, उन विड्रॉ कयो, सभु कंपनियूं हली वियूं, छो जे उन्हनि खे सैंक्शन खां बाद वारो न पियो खाए, न पिया रही सघनि। उन लिहाज़ सां जे ॾिठो वञे त असांजे बायलैटरल बि कंदासूं उन्हनि सां, या बॉर्डरिंग बि कंदासूं, उन सूरत में बि हिकिड़ो कानून आहे अमेरिका जो, ऐं उहो कानून आहे ट्रेजरी एक्ट जे तहत अमेरिका उन कंट्री ते सैंक्शन लॻाए थो सघे जेको कंट्री ॿिए कंट्री सैंक्शन ज़दा कंट्री खां वापार थो करे। ठीकु जमील साहब, गॾो गॾु इहा बि ॿुधाइजो, छाकाणि त ऑपोज़िशन बि इहा ॻाल्हि जेका ऑपोज़िशन करे पई ऐं हिन वक़्तु तमामु घणी अहम बि आहे, डिस्कस थिए पई, जेतोणीकि इन क़िस्म जा नोईअ जा जेके दौरा हुजनि था उहे प्री शेड्यूल हुजनि था, उनजी जेके टाइमिंग हुजे थी या जेके एजेंडा हुजे थी उहा तमामु अॻिते थी वञे थी, पर उन बावजूदि ऐं जेका पाकिस्तान जी ख़ारजा पॉलिसी जेका वाज़े कई वई आहे त ही मुल्क कंहिं बि मख़सूस ब्लॉक जो, कंहिं हिकु ब्लॉक जो हिसो न थींदो, बल्कि हाणे घण मुल्की पॉलिसीअ ॾांहुं लाड़ो नज़र अचे पियो, बयाननि मां जेको महसूस थिए पियो। पर उन बावजूदि इन समूरनि शयुनि खे साम्हूं रखंदे ही तासुर जेका हिन वक़्तु टाइमिंग आहे उहो इम्कानी तौर ते कि ग़लति इशारा बि मोकिले सघे थी, इहे ग़लति तासुर बि जोड़े सघे थी, जेके तासुर पाकिस्तान जे लाइ अॻिते हली शायदि वधीक ॾुखिया साबित थियनि, ख़तरनाक साबित थियनि। छा चवंदो न थिए? बिल्कुलु, तव्हांजो तमामु अहम इहो इशारो आहे, ऐं ईअं ई थींदो आहे जेॾी महिल इन अणाए वक़्तु इन डिफिकल्ट टाइम ते रशिया में को बि सरबराह या को बि हेड ऑफ गवर्नमेंट उते विज़िट करे थो पियो, त उन मुल्क जी सिग्नलिंग वेंदी वेस्टर्न कंट्रीज़ ते, ऐं उहो सिग्नलिंग जेका आहे जेसीं ताईं उनखे असां न्यूट्रलाइज़ करण लाइ ॿियूं मूवमेंट कयूं, असां जीअं असां कल्ह कईसीं न्यूट्रलाइज़ करण जी मूवमेंट, ऐं उहा इहा हुई त असांजो सफ़ीर जेको आहे मेजर जनरल साहब यूक्रेन में, उन ऐलान कयो उतां जी डिप्टी फॉरेन मिनिस्टर खे, ऐं यकीन ॾियारियो उनखे त असां रिस्पेक्ट था कयूं सॉवरनिटी एंड टेरिटोरियल इंटीग्रिटी ऑफ यूक्रेन, ऐं असां बिल्कुलु कोशिशि कंदासूं त इहा सॉवरनिटी ऐं जेका इंटीग्रिटी आहे उहा बरक़रार रहे। ठका कराए रशिया उन खां बाद, ऐं उन जेके 2 इलाइक़ा उन जा आज़ादु तस्लीम बि करे वरिता, डिप्लोमेटिक उन रिलेशन बि उन्हनि सां क़ाइमु करे वरिता, ऐं हाणे इहो जो बाइडन बि उन जे करे चवे थो पियो त रशिया हिते रुकंदो न, अञा अॻिते वधंदो। त मक़सदु चवण जो इहो आहे त प्राइम मिनिस्टर बि असांजे चयो हो त डायलॉग जे थ्रू इहो मसइलो हल करणु खपे, इहे इनकर्जन जे थ्रू मसइलो न हल करणु खपे। हाणे इन बयान खां बाद उते वञे थो पियो, मुल्क में सियासी हालतूं अहिड़ियूं आहिनि त जेके मुल्क हमेशह उहे वधीक कामयाबु थींदा आहिनि इन्हनि मीडिएशन में, इन्हनि मामलनि में जेके घरेलू तौर ते यानी घरू तरीक़े सां जेके मज़बूत हूंदा आहिनि, इंटरनल जंहिंजी स्टेबिलिटी हूंदी आहे। असांजी हिन वक़्तु पॉलिटिकल स्टेबिलिटी बि ठीकु न आहे, असांजी माशी स्टेबिलिटी 2267 बिलियन डॉलर जा असां मक़रूज़ आहियूं, इंटरनल ऐं एक्सटर्नल। असांजी माशरती लिहाज़ सां असांजो मामिलो थोरो लॻो पियो आहे ख़राबु, त उन लिहाज़ सां असां एक्सटर्नली पाण खे एतिरो मज़बूत पेरनि ते नथा बीह सघूं। इहो ही पॉइंट मैं अकरम साहब के सामने रखंदम। अकरम साहब, आपने जमील साहब को सुना, बड़े अहम उन्होंने कुछ नुक्ते, ये वही नुक्ते हैं जो हम अक्सर बेशतर ऑपोजिशन से भी सुनते हैं। एक आपके हुकूमत पर जो बड़ी तनकीद होती है उसमें सियासी मुखालफिन की जानिब से एक नुक्ता ये भी होता है कि बड़े बड़े मामलात वो फॉरेन पॉलिसीज़ से रिलेटेड हों, वो मुल्क के इंटरनल सिक्योरिटी से रिलेटेड हों, या इस किस्म की बहुत अहम मामलात में स्टेक होल्डर्स को आप लोग साथ नहीं लेते
देते, जिसकी वजह से वो चीज़ें ना तो पार्लियामेंट में आती हैं, ना उन पर टाइमली डिस्कशन हो सकती है। अब इस मामले पर भी ऑपोजिशन का ये कहना है कि एक ऐसा वक्त, एक बड़ा सिग्नलिंग बड़ी इंपॉर्टेंट होती है वेस्टर्न कंट्रीज़ के, और जब से ये हुकूमत आपकी आई हम ये सुनते हुए आए हैं कि नहीं, बाइडेन इंतज़ामिया की जानिब से कोई राब्ता नहीं है, कोई मामलात नहीं है। अब इस मौके पर ये दौरा मुश्किलात भी पैदा कर सकता है पाकिस्तान के लिए, तो उसके हवाले से क्या तैयारी होगी, क्या स्ट्रेटजी होगी आपकी गवर्नमेंट की? देखें, पहली बात तो ये है नाजिया कि ये जो दौरा है ये तो बहुत पहले से प्राइम मिनिस्टर इमरान खान का रशिया का दौरा तयशुदा था। बिल्कुल। तो अब अगर वहाँ पर इस वक्त जो सूरत हाल है अगर चेंज हो चुकी है तो उससे हमारा या पाकिस्तान का कोई लेना देना मैं समझता हूँ कि किसी किस्म का नहीं है। हमारे जो अपने बायलैटरल इश्यूज हैं हम उनके ऊपर बात करेंगे, हम उनके साथ ट्रेड के ऊपर बात करेंगे, हम उनको सीपैक में शामिल होने की दावत देंगे प्राइम मिनिस्टर। और देखें, जो इस वक्त सूरत हाल इंटरनेशनली बनी हुई है वो आपके सामने है। अमेरिका का जितना हमने साथ दिया, अमेरिका ने हमेशा हमसे जान छुड़ाने की कोशिश की। और हाल ही में आपने देखा होगा कि जो इंडिया के साथ वो ताल्लुकात उन्होंने इस्तेवार किए हैं और पाकिस्तान को 85,000 लोगों की जानों की कुर्बानियों के बावजूद पाकिस्तान को निगलेक्ट किया है और उसके मफादात के खिलाफ जाके काम हो रहे हैं। तो जाहिर बात है पाकिस्तान को भी अपना कोई ना कोई रास्ता तो लेना होगा। और मैं समझता हूँ कि इसके अंदर कोई बुराई नहीं है कि 23 साल बाद प्राइम मिनिस्टर इमरान खान पाकिस्तान के पहले सरबराह होंगे जो रशिया का दौरा कर रहे हैं। और आप देखेंगे कि ये दौरा इंशाल्लाह ताला इंतहाई फ्रूटफुल साबित होगा हमारी कंट्री के। ठीक, हम भी यही उम्मीद करते हैं कि आप जो कह रहे हैं कि वो ऐसा ही साबित हो, ये दौरा फ्रूटफुल साबित हो मुल्क के लिए। लेकिन इसमें क्या हर्ज है जो अपोजिशन कहती है कि हमें अगर एज स्टेक होल्डर्स हमें साथ रखा जाए, हमसे मशावरत की जाए इस किस्म के अहम दौरों से पहले या इस किस्म के अहम मामलात से पहले? देखिए, अपोजिशन तो जितना मैं समझता हूँ कि बैडली प्ले कर रही है इस वक्त, बजाय इसके कि वो हुकूमत के साथ सर जोड़ के बैठने पे तैयार हो और कोई इस तरह का माहौल बनाए, वो तो हुकूमत को गिराने की बातें कर रहे हैं। वो तो एक पार्टी ने हुकूमत के खिलाफ मार्च का ऐलान किया हुआ है और बाकी सारी पार्टियां मिलकर तो इन्हीं मामलात को बुनियाद बनाकर कहते हैं कि एक नुक्ता ये भी है, कुव्वत देने के बजाय ये तो हुकूमत को गिराने के चक्कर में लगे हैं। तो ऐसे माहौल में इनके साथ क्या बात और क्या मुशावरत हो सकती है? नहीं, ये तो अब की बात है। वो तो बहुत पहले से ये कहते हुए आ रहे हैं कि ये भी एक नुक्ता है कि हम क्यों हुकूमत के अगेंस्ट जाकर खड़े हुए हैं। इसी पॉइंट को आपके सामने रखूंगी। अदनान साहब, क्या कहेंगे ऑपोजिशन की बात में कितना वज़न आप समझते हैं? जमील साहब को भी आपने सुना, वो समझते हैं सफारती मामलात को, ताल्लुकात को बहुत गहरी नज़र से देखते हैं, अच्छी तरह से समझते हैं कि सिग्नलिंग बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, जो मैसेजिंग होती है, जो आपकी टोन होती है, वो बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। और एक ऐसी हुकूमत जिसको इंटरनली बड़े मसाइल का सामना हो, वो कैसे अपने मैसेज को या किसी भी चीज़ को बाहर रख सकेगी? देखिए, 70 साल हो गए, यहाँ तो इंटरनल प्रॉब्लम रहते ही हैं जी। आपने देखा 50s में आए रोज़ हुकूमतें बदलती थीं, कहा जाता था कि इतनी तो नेहरू ने कहा मैं धोतियाँ नहीं बदलता जितने पाकिस्तान में वज़ीर आज़म बदल जाते हैं। फिर 3 बार 4 बार यहाँ फौजी हुकूमत भी रही। तो पाकिस्तान का जो सियासी लैंडस्केप है वो तो ऐसे ही है, उखाड़ पछाड़ चलती रहती है। अगर इसको मद्देनजर रखा जाए फिर तो कोई भी काम नहीं हो सकता। तो ये तो कोई ऐसी खास बात नहीं है। अलबत्ता जो आप कह रही हैं कि अपोजिशन से मुशावरत तो कौन करता है? क्या पीपल्स पार्टी ने कभी की थी? क्या नवाज शरीफ कभी की थी? जब वो नरेंद्र मोदी की दावत पे भागे भागे वहां चले गए थे और सफारत खाने दाए बगैर ही वो वहां पे मीटिंगें करते फिर रहे थे, तो क्या उन्होंने किसी से मुशावरत की थी अपोजिशन से? तो ये सब बातें अपोजिशन में लोग जो होते हैं वो कहते ही हैं। कोई ना कोई उन्हें ऐसा नुक्ता चाहिए होता है कि हुकूमत पे तनकीद करें। लेकिन देखना यह है कि जो रियासती इदारे हैं वो इमरान खान के पीछे हैं। पाकिस्तान ने चीन और रूस से अपना इश्तराक और ताउन बढ़ाने का फैसला किया है और ये एक बड़ी अहम तब्दीली है। दुनिया में एक तरह की नई तरह की सरजंग शुरू हो गई है। अब हम चाह रहे हैं कि हम एक नावाबस्ता गैर जानिबदार भी रहें, किसी ब्लॉक में पूरी तरह शामिल भी ना हों, लेकिन हमारी कुर्बत तो चीन के साथ है। चीन और रूस के साथ ही हमें अपनी कुर्बत बनानी होगी, क्योंकि अमेरिका के मुतालबात हम मान नहीं सकते। वो चाहता है कि इस इलाके की थानेदारी इंडिया को दे दी जाए, जो हम नहीं मान सकते। तो अब हमारे लिए अगर इस मौके पे अचानक दौरा कैंसिल कर दिया जाता तो उसका नुकसान ज्यादा होता। ठीक है कि हालात वहां पे यूक्रेन के अच्छे नहीं हैं, लेकिन
दौरा करने के नुकसानात कम होंगे, ना उसको कैंसिल करने के नुकसानात बहुत ज्यादा होते। अल्लाह अल्लाह करके तो पुतिन के साथ एक रैपो डेवलप हुआ है। अब इमरान खान को उन्होंने दावत दी है। पहले सदर तो हमारे गए थे, सदर जरदारी साहब भी गए थे 2011 में, मुशर्रफ भी गए थे, लेकिन वजीर आजम को सरकारी दौरे की दावत दी गई और वहां पे वो इस तरह जा रहे हैं। गार्ड ऑफ ऑनर मिलेगा, गैस के मंसूबे हम चाहते हैं, काजाकिस्तान से पाइपलाइन आ जाए। जमील साहब ने शायद ये भी कहा कि वो करेंसी का मसला होगा क्योंकि सैंक्शंस होंगी रूस के ऊपर, तो उसके लिए फिर ये है कि मुतबादिल जो निज़ाम है चीन ने तैयार किया है और करेंसी, चीनी करेंसी में भी बातचीत हो सकती है, लेन देन हो सकता है। और रूस जो है एक अमीर मुल्क है, तरक्की याफ्ता मुल्क है, साइंस टेक्नोलॉजी में तरक्की याफ्ता मुल्क है। हमारे तालिब इल्म वहाँ जा सकते हैं, वो हमें बहुत हेल्प कर सकते हैं। लेकिन हमें अदनान साहब अब ये भी देखना होगा, क्योंकि ये एक जो टाइमिंग है वो इस लिहाज से भी अहम है कि इस वक्त वो हम वसाइल के लिहाज से कहें या हम तवज्जो के लिहाज से कहें, इस वक्त रशिया का सारा फोकस तो इसी इशू पर ज़्यादा मरकूज़ है। जमील साहब, हाँ हिन सूरत हाल में जेके एक्सपेक्टेशंस अदनान साहब या अकरम साहब कयूं, उहे केतिरियूं हक़ीक़त ते मबनी हूंदियूं, केतिरियूं हक़ीक़त ते बदल हूंदियूं। ऐं हिकिड़ी ॿी ॻाल्हि बि उन्हनि कई त हाणे जेका असांजी हिस्टोरिकल डायरेक्शन रही आहे, हिन दौरे खे उन तब्दीलीअ जी अलामत तौर बि ॾिठो वेंदो ऐं पाकिस्तान जी जेका हाणे हिकिड़ी नई शइ साम्हूं अचे पई त असीं घण मुल्की पॉलिसी ॾांहुं वधंदासीं, उनखे बि हीउ दौरो सपोर्ट कंदो ऐं चीन ऐं रशिया जे विच में हिकु ब्रिज जे किरदार वारो जेको मामिलो आहे उनखे बि स्ट्रेंथन कंदो। न उहो त ब्लॉक सॼो स्ट्रेंथन थींदो न। तव्हांखे मां याददानी कराईंदो हलां त जेके इन ओलंपिक्स में जॉइंट कम्युनिके निकितो हो रशिया ऐं चाइना जो, शीपिंग जेको हुन यूक्रेन खे सपोर्ट कयो हो ऐं रशियन पुटिन उन जेको वन चाइना सिस्टम खे बेल्ट एंड रोड खे सपोर्ट कयो हुन पूरो, त हू त पंहिंजा कार्ड उन्हनि बिल्कुलु दुनिया खे शो करे छॾिया आहिनि। ऐं उन खां अलावा तक़रीबन $178 बिलियन जो उन्हनि ऑयल एंड गैस जो जेको आहे उहो एग्रीमेंट बि कयो आहे। हाणे उनखे रशिया खे जेके आहे सट लॻी बि या नुक़सानु थियो बि सैंक्शन खां, त कुझु न कुझु जेका पहिरियां उहो एग्रीमेंट करे आयो आहे चाइना सां, उन सां फ़ाइदो थी पवंदो। ऐं जो करेंसी वारी ॻाल्हि कई अदनान साहब, उहो बॉर्डरिंग सिस्टम, असांजो प्रॉब्लम इहो आहे उन करेंसी में त चाइना जेको उहो असांखां माल वधीक असांखे ॾींदो आहे ऐं असांखां माल घटि वठंदो आहे, त असांजो बैलेंस ऑफ ट्रेड जेको आहे उहो असां नेगेटिव में वेंदा आहियूं। ऐं नेगेटिव में वेंदा आहियूं त असां पोइ उनखे छा ॾियूं, पंहिंजो ज़मीन जो टुकड़ो ॾियूं, असां ॿी का शइ ॾियूं। बॉर्डरिंग त उन वक़्तु थींदी आहे न त तव्हां जेको आहे ओतिरो ई माल ॾियो जेतिरो तव्हां वठो था पिया कंहिं ॿी शिकिल में। मिसाल तौर ते हिते रशिया में जे असांखे पाइपलाइन विछाए थो ॾे, ऐं उहो सैंक्शन ते हाणे 14 वारी हुई, उन करे पाइपलाइन न विछाए सघियासीं, असां उनखे कॉन्ट्रैक्ट खे फाइनलाइज़ न करे सघियासीं, त हाणे उन खां बि तमामु मज़बूत ऐं तमामु ख़तरनाक सैंक्शन लॻे थी पई। बाइडन हुन चयो आहे या जो न लॻायो आहे, चयो त हाणे असां हिनखे वधीक कंदासीं। त उन में बॉर्डरिंग जे मामले में असांखे पोइ गुड्स एंड सर्विसिस पाण वटि अहिड़ा रखणा हूंदा जेके रशिया में उहो असां लेवल अप करे ऐं बैलेंस ऑफ ट्रेड करे सघूं। जो असां वटि इन्वेस्ट कनि था पिया, असां वटि पैसो ख़र्चु कनि था पिया, त असां हुन में कयूं। त उन में असांखे हिते उहा मज़बूती खपे जंहिंमें असां गुड्स एंड सर्विस अहिड़ा, हाणे इन वक़्तु असां वटि लेदर आहे, असां वटि कॉटन आहे जेके असां उन्हनि खे ॾेई था सघूं, ऐं असां वटि हिते जेके हिकु ॿ शयूं ॿियूं आहिनि, त उन मुताबिक़ उन्हनि खां असां मशीन था वठूं, उन्हनि खां असां डिफेंस इंडस्ट्री में कोलाब्रेशन था वठूं, उन्हनि खां स्टील मिल जी ॻाल्हि हले पई, उन्हनि खां इहो 1100 किलोमीटर जी जेका स्टीम गैस ताईं पाइप जी हले थी पई। त उन में अल्टीमेटली इन सॼी ब्लॉक में SCO कंट्री जेके आहिनि, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइज़ेशन वारा कंट्री या ECO जेके इकोनॉमिक कोऑपरेशन ऑर्गेनाइज़ेशन वारा इन ब्लॉक जा कंट्री आहिनि, अल्टीमेटली उहो मक़सदु उन जे चार्टर में बि आहे। अल्टीमेटली असां उन साइड ते वञूं था पिया। ठीकु आहे, असांजो अमेरिका सां बि इन वक़्तु नंबर 1 एक्सपोर्टिंग डेस्टिनेशन असांजी आहे अमेरिका। असां एतिरी जल्दी जेको आहे इहो नथा करे सघूं त असां बिल्कुलु उन खां जुदा थी वञूं, उहो आस्ते आस्ते ऑटोमेटिकली असां उन साइड ते वञूं था पिया। ठीकु जमील साहिब, इन ते वधीक मां सां बि ॻाल्हाईंदासीं। ऐं हीउ जेको दौरो आहे जेको 2 ॾींहंनि ते ॿधलु आहे, 2 ॾींहंनि खां पोइ जॾहिं वज़ीर आज़म ते पहुचंदा त उहो जेको माहौल हूंदो, सियासी जेको माहौल हूंदो, अकरम साहब 2 दिन के बाद जब वज़ीर आज़म साहब अपनी टीम के साथ हमारा ये दौरा मुकम्मल करके वतन वापस पहुँचेंगे तो उस वक्त
ایک تو پیپلز پارٹی کا لانگ مارچ اور وہاں سے وہ شروع ہو چکا ہوگا عدم اعتماد کے حوالے سے جو مشن اپوزیشن لے کر نکلی ہے. اپوزیشن بڑی پر امید ہے کہ ہم اس میں بھی کسی فائنل نقطے تک پہنچ چکے ہوں گے, تو اس حکومت کے لیے بڑا مشکل وقت ہے. اب آپ نے جیسے کہا کہ یہ پیالی میں طوفان سے زیادہ کوئی بات نہیں اور ایسا کچھ ہوگا نہیں جو سامنے پاس کیا جو ایکسپیرینس ہمارے سامنے ہے, لیکن بہرحال جس طرح سے ہم نے سنا کہ آج حکومتی MNA سے دستخط لیے جا رہے ہیں, کچھ ایسے قسم کے کچھ اقدامات لیے جا رہے ہیں, مزید حکومت کیا کرنے کا ارادہ کرتی ہے, پلان کیا ہوگا آپ کو, کس طریقے سے اس لانگ مارچ یا اس حکومتی جو اپوزیشن کی دوسری سرگرمیاں ہیں اس کو کاؤنٹر کرنے کا ارادہ حکومت کیسے رکھتی ہے, کیا اسٹریٹجی ہے آپ کی؟ جی اکرم صاحب. ابھی تک ہماری طرف سے تو الحمدللہ کوئی نہ کسی قسم کی کوئی گھبراہٹ ہے اور نہ ہی کسی قسم کے کوئی استعفے لیے جا رہے ہیں اور نہ ہی کسی قسم کے کوئی دستخط لیے جا رہے ہیں. یہ سب کچھ تو اپوزیشن اپنے ارکان کے ساتھ کرتی پھر رہی ہے کہ ان سے استعفے بھی لیے جا رہے ہیں اور ان سے دستخط بھی لیے جا رہے ہیں. تو ایسی تو پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے تو میں آپ کو وثوق سے دعوے سے کہہ سکتا ہوں کہ کوئی اس طرح کی ایکٹیویٹی کسی قسم کی نہیں ہو رہی. نہیں تو پھر کاؤنٹر اسٹریٹجی تو کوئی بنائی ہوگی حکومت نے اکرم صاحب. جیسے جیسے الیکشن قریب آئیں گے اپنی ایکٹیویٹیز تو کرنی ہے. یہ اپنے آپ کو موبلائز کرنے کے لیے اپنی پارٹیز کو موبلائز کرنے کے یہ حربے ہیں کیونکہ اور تو ان کے پاس کوئی ایجنڈا ہے نہیں اور وہ اس پہ کامیاب ہو رہے ہیں. جیسے عدنان صاحب نے فرمایا کہ یہ تاثر تو اپوزیشن دینے میں کامیاب ہو رہی ہے. جی آپ ہمارا ساتھ دیں اور آپ دیکھیں گے کہ خواہ یہ لانگ مارچ ہو ان کا یا ان کی عدم اعتماد کی تحریک ہو, دونوں میں ان کو بری طریقے سے ناکامی ہو. ٹھیک ہے, لیکن سیاست میں تاثرات بڑی امپورٹنس رکھتے ہیں. عدنان صاحب آپ کو یاد ہوگا, مجھے کریکٹ می اف آئی ایم رانگ, کہ ابھی تک ماضی سے لے کر اگر کوئی عدم اعتماد کی تحریک کامیاب ہوئی تو وہ آیا چندری گڑھ کے خلاف ہی تھی. اس کے علاوہ پاکستان پیپلز پارٹی نے بھی فیس کیا, یہ سارے معاملات ہوئے. ہم نے دیکھا کہ کامیاب ہو یا نہ ہو, لیکن جب بھی اس قسم کے معاملات ہوئے ہیں ماضی سے لے کر حال تک, جو بھی حکومت ہو اقتدار میں اس کو بڑا نقصان ہوا ہے, وہ بڑی کمزور ثابت ہوتی ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ اس بار اگر جیسے اکرم صاحب نے فرمایا کہ ایسا اگر وہ لے کر بھی آتے ہیں تو تب بھی ان کو ناکامی ان کے نصیب میں ہوگی, ان کا مقدر ہوگی. آپ سمجھتے ہیں کہ اس لحاظ سے ایک وہ بھی تاثر بن سکتا ہے اس حکومت کے حوالے سے؟ دیکھیں حکومت تو پہلے ہی کمزور ہے کیونکہ بہت ہی تھن میجورٹی ہے, وہ بھی الائنس کر کے اس میں مزید اضافہ ہوگا آپ سمجھتے ہیں اس اپوزیشن کی کوشش کے بعد؟ دیکھیں میرا فائنل اسیسمنٹ یہ ہے کہ یہ حکومت گرا سکتے ہیں, بنا نہیں سکتے. ٹھیک, مجھے یہ لگتا ہے کہ اگر انہوں نے بہت زیادہ زور لگایا اور بہت کامیابی حاصل کر لی, فرض کریں کہ ترین بھی ٹوٹ جائے عمران خان سے, جو کہ جس کا امکان مجھے نہیں لگتا, اور قاف لیگ بھی ٹوٹ جائے, MQM بھی ٹوٹ جائے, تو حکومت گر جائے گی. اس کے بعد ایک آئینی بحران پیدا ہوگا اور مجھے ڈر ہے کہ شاید یہ پورا جو سسٹم ہے یہ ڈی ریل ہو جائے گا, کیونکہ یہ لوگ پھر کوئی حکومت بنا نہیں سکیں گے. پھر کیا ان کے پاس آئینی راستہ بچے گا؟ پھر اس کے لیے عمران خان بھی ان سے تعاون نہیں کریں گے. اگر یہ انہوں نے اس طرح ہٹایا کہ جس سے ایک بحران پیدا ہو, تو عمران خان بھی پھر میدان میں ہوں گے, وہ بھی جلد سے جلوس کریں گے, یہ بھی جلد سے جلوس کریں گے. تو اس فضا میں مجھے یہ لگتا ہے کہ پھر غیر آئینی راستے جو ہیں وہ ہموار ہوں گے. پھر کوئی ایسا طریقہ ہوگا کہ جس میں شاید عدلیہ مداخلت کرے یا کوئی اور ریاستی ادارے مداخلت کریں, تب جا کر کوئی سسٹم بنے یا کوئی نیا بندوبست بنے. مجھے لگتا ہے کہ یہ سارا جو ان کا ہنگامہ ہے, اگر یہ اول تو مجھے یہ لگتا ہے کہ شاید جہانگیر ترین اپوزیشن کو سپورٹ نہیں کریں گے, کیونکہ اس سارے کھیل میں ان کا فائدہ کچھ نہیں ہے. ان کے جو ارکان اسمبلی 10-12 ہیں, اگر وہ فرض کریں کہ اس وقت اپوزیشن کا ساتھ دیتے ہیں, وہ تو اپنے حلقے میں جا کے الیکشن بھی نہیں لڑ سکیں گے. اور کتنے وعدے کیے جاتے ہیں ٹکٹوں کے جو پورے ہی نہیں کیے جاتے ہیں, ماضی میں بھی ہم نے دیکھا ہے. کہ پھر یہ اتنی ملاقاتیں, بیک ٹو بیک رابطے, ملاقاتیں, یہ اتنی تام جھام, وہ پھر کس لیے ہوگی یہ ساری ایکسرسائز؟ اور کیونکہ ساتھ ساتھ کل آپ نے سنا ہوگا بلاول صاحب کا یہ سٹیٹمنٹ کہ وہ کہتے ہیں کہ یہ جو ایک پورا ایک مشن ہے یا پوری جس کی وہ بات کر رہے ہیں, وہ یہ کہتے ہیں کہ اپوزیشن کی ساری ساکھ اور سیاست اس وقت اسٹیک پر ہے. یہ سیاستدان نا بہت ساری باتیں کرتے ہیں, ہر بات کو اتنا سنجیدہ نہیں لینا چاہیے. اصل ان کا جو عمل ہے وہ دیکھنا چاہیے. ایک تو بات یہ ہے کہ وہ حکومت کو پریشر میں رکھنا چاہتے ہیں, جو کہ انہوں نے رکھا ہوا ہے. ایک بات تو ایک بات. دوسرے وہ چاہتے تھے کہ پینک ہو کے اسمبلیاں توڑ دیں. انہوں نے ملتان کے جلسے میں بھی کہا تھا کہ اسمبلیاں توڑو, الیکشن میں آؤ, ڈرتے کیوں ہو. وہ کوشش کر رہے تھے کہ یہ گھبرا جائے.
عمران خان ان کا یہ بھی کیلکولیشن ہے کہ اگر حکومت گر گئی تو عمران خان ملک سے چلے جائیں گے، اسی لیے مریم کہتی ہیں کہ ہم تمہیں لندن نہیں جانے دیں گے. میں اس سے اختلاف کرتا ہوں. عمران خان جو ہیں سائیکولوجیکلی ایک سٹرونگ آدمی ہیں، وہ فائٹر ہیں، وہ فائٹ کریں گے. اور یہ جو صورتحال ہے اگر بحران بڑھا تو پھر شاید یہ جو آئینی بندوبست ہے اس کو نقصان پہنچ سکتا ہے. ٹھیک، پوائنٹ مجھے ٹیکن یہ عدنان لگتا صاحب، ہے پوائنٹ ٹیکن. جی ٹھیک عدنان صاحب، پوائنٹ ٹیکن. جمیل صاحب جیکا صورتحال ہی ॿुधाइनि पिया सियासी अख़बार जेका फौरी तौर ते न पिया रीड कनि त को इस्तेकाम नज़र अचे पियो, पॉलिटिकल जेका इनस्टेबिलिटी आहे उहा लॻे पई त अञा कंटिन्यू रहंदी. अहिड़ा ई ॾींहं हूंदा त अहिड़नि ॾींहंनि में फॉरेन पॉलिसी जी जेकॾहिं असीं डायरेक्शन चेंज बि कयूं था या चेंज बि थिए थी त उहा केतिरो फ़ाइदो ॾेई सघंदी? फॉरेन पॉलिसी अगेन जेका आहे उहा त फॉरेन मिनिस्ट्री उनखे इम्प्लीमेंट कंदी आहे. फॉरेन पॉलिसी ॾिनल आहे, जे हुन में का चेंज आहे मिसाल तौर ते उहा इन कंसल्टेशन थींदी आहे, हुन में ॿिया स्टेक होल्डर बि शामिल थींदा आहिनि, त उहा त पंहिंजी जाइ ते उहा पंहिंजे हिसाब सां हलंदी, अनलेस त प्राइम मिनिस्टर हुनखे इंटरफियर करे चवे त न हाणे मां अचानक चेंज थो कयां पियो. नॉर्मली ईअं थींदो न आहे त फ़क़ति प्राइम मिनिस्टर जेको आहे उहो चए त तव्हां फॉरेन पॉलिसी जी डायरेक्शन चेंज करे छॾियो. हुन में स्टेक होल्डर सभु हूंदा आहिनि, हुनजी इनपुट वठी पोइ कंदा आहिनि. त इन करे उन में मां नथो सम्झां त का तब्दीली बि असांजो इंस्टांस आहे. हा, जेके असांजा लीडर वेंदा आहिनि, जीअं हाणे प्राइम मिनिस्टर वियो आहे उते रशिया में, त उन जा जेके हूंदा आहिनि एक्टिविटीज़ उते, ऐं उन जी जेकी पंहिंजी हिकिड़ी पर्सनैलिटी हूंदी आहे, उन्हनि जी हिकिड़ी डिलीवरी हूंदी आहे, उन ते इम्पैक्ट पवंदो आहे. फॉरेन पॉलिसी त ख़ैर उहा रहंदी आहे. उनजी अचीव करण लाइ जेके हिन वक़्तु असां सभु ॻाल्हायोसीं त छा कुझु असां अचीव करे था सघूं, जे उहा अचीवमेंट थिए थी पई त माना असांखे ॿ फ़ाइदा थींदा. हिकु त ट्रेड जो फ़ाइदो थींदो, ट्रेड इंडस्ट्रीज़ कोलाबोरेशन, ट्रेनिंग, ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी, डिफेंस कोलाबोरेशन. उन खां अलावा असांखे जियो पॉलिटिकल लेवल ते जे असां बैलेंस थोरो घणो करे वियासीं, मुश्किल थो लॻे, जे करे वियासीं त असांखे उन तमामु घणो फ़ाइदो थींदो. छो जे असां जे हिन वक़्तु ॾिसूं पंहिंजो पाण, असां पंहिंजो इवेल्युएशन कयूं ते असां जेको आहे स्ट्रिंग ऑफ पर्ल जा बि असां आहियूं, उन में पार्टिसिपेट था कयूं, ऐं असां एससीओ में पार्टिसिपेट था कयूं, ईसीओ में असां इन सॼे ब्लॉक में तमामु एक्टिव आहियूं असां. ऐं अमेरिका सां असांजो जेको आहे उहो बम्पी क़िस्म जो रिलेशन अॼुकल्ह आहे, हमेशह रहियो आहे ट्रांज़िशनल रिलेशन. मां सवाइ हिकिड़े दफ़े असां स्ट्रेटेजिक रिलेशन में हुआसीं त, पर उन खां बावजूदि अमेरिका असांजो हाईएस्ट एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन आहे. अमेरिका जो कब्ज़ो आहे सभिनीनि समूरनि जेके फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन आहिनि. अमेरिका जो असुरु आहे IMF ते, FATF ते जंहिंजी मीटिंग हले थी पई, ऐं जंहिंमें सोधूं था पिया त ग्रे लिस्ट खां असां नथा कढनि. त इहे सभु शयूं जेके आहिनि इहे इन्फ्लुएंस त आहे हुननि जो, त असां अचानक उन्हनि खे बि नथा छॾे सघूं. आहे तमामु इहो डिफिकल्ट बैलेंसिंग एक्ट, पर असां पंहिंजो पाण इन साइड ते लीन अप थी वियासीं. जेको ही ब्लॉक आहे रशिया ऐं चाइना, छो जो हाणे तमामु घाटा हिननि जा रिलेशन थी विया आहिनि मिलिट्री लिहाज़ सां बि. स्पेस वेपनाइज़ेशन में चाइना रशिया उहो तमामु अॻिते हलिया विया आहिनि, अमेरिका उनखे उनजी ॻणती थी पई आहे. त उन लिहाज़ सां ॾिठो वञे त हिन वक़्तु असां न चाहींदे बि तक़रीबन हिन ब्लॉक में आहियूं, ऐं असांखे पंहिंजो फ़ाइदो नुक़सान इन ब्लॉक में रहंदे ॾिसणो पवंदो. ठीकु, ऑप्शंस कहिड़ा आहिनि जेकॾहिं क्विकली ॿुधाए सघो असां वटि हुकूमत वटि? जमी साहब मां आवाज़ तव्हांजो कटिजी वियो. मूं चयो त फौरी तौर ते कहिड़ा ऑप्शंस आहिनि? जीअं मां चयो त असांखे लाइ ॾाढो अहम ही वक़्तु आहे ऐं डिसीजन्स बि तमामु घणो मैटर कंदा. न, असांजो स्ट्रेटेजिक इंट्रस्ट जेको आहे इन वक़्तु घणे में घणो चाइना में स्ट्रेटेजिक इंट्रस्ट आहे, ऐं चाइना ऐं रशिया जेके आहिनि इन वक़्तु हिकु आहिनि. उन लिहाज़ सां पंहिंजे जियो पॉलिटिकल ऐं जियो स्ट्रेटेजिक इन सॼे खिते में जो हुननि जो जेको असरु आहे. एट द सेम टाइम तव्हां ॾिसो असां पंहिंजी जेका आहे बैलेंसिंग फैक्टर असां करण जी कोशिशि कयूं था. इज़राइल 60 कंट्री जेकी हाणे नेवल एक्सरसाइज़ कनि था पिया, हुन में इज़राइल बि शामिल आहे, सऊदी अरब, UAE, खोड़ सारा ॿिया कंट्री, ऐं असां बि इज़राइल सां शामिल आहियूं हिन वक़्तु पंहिंजो मिलिट्री एक्सरसाइज़ था कयूं पिया हुन में. असां बैलेंसिंग फैक्टर कयूं था पिया, इन करे करणु ज़रूरी आहे इहो. ठीक जमी साहब, पॉइंट टेकन. अकरम साहब, खारजी और दाखिली चैलेंजेस आपकी हुकूमत के सामने हैं, फाइनल कमेंट आपका? बढ़ते हुए चैलेंजेस. इमरान खान जुल्फ़िकार अली भुट्टो के बाद पाकिस्तान को बड़ी मुश्किल से ऐसा लीडर नसीब हुआ है जिसको इंटरनेशनली तौर पे भी बहुत ज़्यादा सराहा जा रहा है.
तो मैं समझता हूँ कि इंशाल्लाह ताला ना सिर्फ हमारी खारजा पॉलिसी बड़ी मजबूती से आगे बढ़ रही है और इंशाल्लाह ताला जो दाखिली चैलेंजेस हैं उनसे भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने जिस कामयाबी के साथ निपटा है, तो इंशाल्लाह ताला पाकिस्तान आगे तरक्की करे। ठीक है अकरम साहब, बहुत शुक्रिया आपका। अदनान आदिल साहब, जमील अहमद साहब, अटनी जी वॾी वॾी महिरबानी। नाज़रीन प्रोग्राम अवां ॾिठो अहम ही जेके मामला हिन वक़्तु हलंदड़ आहिनि ऐं ईंदड़ जेके कुझु ॾींहं हूंदा उन्हनि खे असांखे ॿुधाईंदा बि, सिचुएशन समूरी वाज़े कंदा। वज़ीर आज़म साहिब जो 2 ॾींहंनि जो दौरो आहे, दौरे खां पोइ जॾहिं हू वापसि वतन पहुचंदा त उन वक़्तु जेको सियासी माहौल हूंदो उहो तमामु घणो गरम बि हूंदो, तब्दील बि हूंदो, ऑपोज़िशन दावाऊं बि करे त उहे जेके ॾींहं हूंदा हिन हुकूमत जे लाइ ॾुखिया ॾींहं हूंदा। पर हुकूमत फ़िलहाल इहो ॼाणाए पई त असां बिल्कुलु घबरायल न आहियूं, बल्कि हाणे ऑपोज़िशन घबराईंदी। ॾिसूं ईंदड़ ॾींहंनि में छा पियो थिए। अव्हां पंहिंजे फीडबैक खां असांखे हमेशह जीअं ज़रूरु आगाह कजो। वरी नए मौज़ू सां, नए महिमाननि सां जल्द अव्हां सां मुलाक़ात कंदासीं। फॉलोअप इशूज़ ज़रूरु अव्हां जे साम्हूं रखंदासीं। तेसिताईं मूंखे ॾींदा इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।